After being closed for around 2 weeks due to bird flu cases, zoos across Uttar Pradesh reopened on Thursday under strict safety protocols. Queues of visitors were seen outside various zoos in the state, including in Lucknow, as people eagerly looked forward to a day out at the zoo after a long wait. सिक्योरिटी और सेफ्टी के लिए बंद रखा है इन्होंने। अब ये फ्रेश तरीके से ओपन हो रहा है, तो हम लोग वो मतलब सिक्योरिटी फील कर रहे हैं, अब इसीलिए सेफ्टी कि हम लोग इसीलिए अब जा रहे हैं, एंट्री कर रहे हैं। और बहुत अच्छा रहता है ज़ू, तो हम लोग को बचपन से बहुत पसंद है क्योंकि हम लोग लखनऊ के रहने वाले हैं। तो ज़ू हम लोग बहुत बचपन में आए थे, काफ़ी टाइम के बाद अपनी फैमिली के साथ आए हैं। ये चिड़ियाघर हाथी पार्क घूमने के लिए आए हैं, अम्बेडकर पार्क। The zoo closure was ordered after bird flu was confirmed in a tigress at Gorakhpur Zoo, prompting a statewide shutdown as a precautionary measure. Although no cases were reported at Lucknow Zoo, it was also closed as a preventive step.